Cool. Okay, so over to the co-host before we start the session. So, good evening, everyone. We welcome you to the episode 2 Magical Powers of Growth Mindset by Global NLP Masters Academy. This is an initiative by CA Dr. Rajkumar S. Yeah, mute CA Gyati ji. Yeah, so should we start? Yes, sir. So, some technical errors at my Okay, end. yeah, please carry on. Okay. So, we are hopeful that we are going to have a lot of key takeaways from today's session. Sir's session will help you in recharging your communication skills, and sir have many creative ways to to affirm and for manifestation of your dreams, and how to turn your negative statements into positive statements, and how to avoid saying something that that may impact the listener negatively. And so we are going to discover the new you and reset your mindset and make a difference. And we'll also learn about the art and science of effective communication. So with this, we wholeheartedly welcome Mr. Pinaki, sir. Over to you, sir. All right. Thank you so much. Thank you so much. So a warm welcome to all of you. I just want to see some hands to be raised who are listening to me for the first time. I am Pinaki, sir. Dr. All right. Sandhya. Thank you so much to be here in my show today, Dr. Sandhya. All right, 1, 2, 3, 4. Oh, only 4, 5. Good. 6. Good. So others know me. Why? Good. 7, 8. All right. 9. Good. So others have attended my sessions earlier. I'm that lucky, really. Wow. Superb. Good. So welcome to this beautiful evening that we are here. And I just want to thank each one of you to be here on this Thursday evening at 4 o'clock. And अगर नींद आने की कोई संभावना है आप लोगों को, किसी को भी बस आंखों में पानी डाल के जल्दी से आ जाइए. Because this is going to be an awesome session, and in every session what I promise is turning points in life. तो आपके लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं. उन टर्निंग पॉइंट्स को वेलकम करने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठिए, है ना. Do not let any distraction to distract you. So that should be the commitment from your side. And pay full attention to every word that I say. Recording भी मिल जाएगा. Recording में वो मजा नहीं है जो मजा लाइव सेशन में होता है. Okay, so be prepared for a super duper exciting evening right now from none other than Pinaki Ray. Okay, so let me share my screen. So first of all, before I start my session, I just want to thank CA Dr. Rajkumar Adukia sir for giving me this opportunity to deliver this training on neuro-linguistic programming. The way I deliver the training is not exactly the way how neuro-linguistic programming trainings were given. I connect it with real life, real-time experiences. Okay, so like growth mindset, the topic that we have chosen is not a part of NLP. लेकिन NLP जब हम करते हैं, we can apply all those knowledge into developing a growth mindset. Okay, so I strongly believe that you are going to have a great session over next 60 minutes. फिर रात आगे के 60 minutes, आगे के 30 minutes will be sir taking all the Q&As. So next 60 minutes, just fasten your seatbelt and we are taking the flight. Okay, so this is who I am. So I am a certified NLP master practitioner, certified corporate trainer from IIT Roorkee. I'm a keynote speaker, mindset trainer, and self-empowerment and resilience coach. Or self-empowerment is the buzzword today. Everybody wants to self-empowered. And those who don't want, they can come to me. I can help you become one. Okay. So
Before we get into this topic called Neuro-Linguistic Programming, let us know what Neuro-Linguistic Programming is all about. जिन लोगों ने पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं या आपको थोड़ा बहुत भी doubt है कि what it could be all about, I put it in the most simplest form. That it's all about a journey from confusion to clarity in all areas of your life through effective communication, personal development, and psychotherapy. So we won't be dealing much with psychotherapy, though I will be using psychotherapeutic language while talking to you. Okay? So as a concept, NLP first appeared in the book The Structure of Magic by Richard Bandler and John Grinder, published in 1975. So इन दोनों को बोला जाता है father of neuro-linguistic programming. Okay. So topic that we will be discussing today is the magical powers of growth mindset. है ना? तो usually discovering magical powers. तो उसकी तैयारी लेके बैठिए. With that mindset, you sit in the session today. Okay, just reset your mindset. Reset your mindset that you are going to experience the magical powers of growth mindset today. With that thought, just sit in the session and stay alert. Stay in the session for next 50 to 55 minutes. All right. So here we go. Those who are attending my session for the first time, ये सिर्फ उनके लिए है. जो लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं उनके लिए नहीं है. ठीक है. आपको क्या दिख रहा है? जो लोग पहली बार मेरी सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? You can speak up. You can unmute and speak up. What do you see? Sir, horizon. Okay. What else? Beautiful. I'm talking to all those 9 people who said you are attending my session for the first time. Sir, this is a bird upside down, holding something in the mouth, in the beak, Okay. I'm sorry. Okay, if it is not bird, then what it is all about? Otherwise, it does look like a horizon, and maybe the reflection of the trees, Mm-hmm. some birds. Mm-hmm. There's a fish Seaside here. There's a fish at the bottom. There are trees at the top left corner. There's a snail, and there's a boat. How many of you could see this small piece of land? Sir, I want to say something. Whatever you see, just talk about it. Whatever you want to see, don't talk about it. Ecosystem, different ecosystems existing A boat together. eating Okay. the whale, I think. Okay. Okay. I can see 2 trees. I can see some grass. I can see a bird. I can see a frog. Yes, there's a frog also. Correct. Yes. I can see river, of course, the horizon. I can see the birds. Good. I good. can Good. see a kind of a one minute. It's a kind of a bird, yes, with a long beak fallen down. Chaliye. Good. So we could see And what was, I stay there. can also see in the bird's claws, when the bird is fallen down, the claws. Don't look at the upside down image. Just look at whatever you're seeing right now. जितना दिख रहा है उतनी उसके बारे में बताइए. ठीक है? So anyway, whatever you have explained is exactly what you are seeing. That's perfectly all right. Let's proceed and see the same picture from a different angle. So हमने किसी को खाली upside down कर दिया. So what do you see now? The bird is holding a baby, Mm-hmm. a chick, whatever in its mouth, Mm-hmm. and is standing on grass. Then, of course, there is the horizon. There are birds. Super, super, super. Now let's see exactly what is happening. So this is the same picture. When we saw it on the left hand side, we could see who, like those of us who are seeing it for the first time. जो पहली बार इसको देख रहे थे हमें पेड़ नजर आया हमें. There we could see a river, or we could see a water area. We could see some space. We could see a fish. We could see a boat and a snail on the boat and all these things, right? And the moment we just horizontally flipped it, we could see, vertically flipped it, we could see a bird. The same claws which were earlier appearing as a tree now has become claws. The same fish is now the head of the bird. The boat has become the beak of the bird. So what essentially I want to talk here, I want to mention is this. Listen to this here. This is very interesting. When I change the way I look at things,
When I change the way I look at things, the things I look at change. When I change the way I look at things, the things I look at change. And this is a famous quote by Dr. Wayne Dyer. And Wayne Dyer is actually famous for this beautiful quote. It's a very powerful quote. And agar aap bolo to NLP is all about that. Neuro-Linguistic Programming. How you are using your language patterns to program your mind. So that when you change the way you look at things, the things you look at change. Okay? So with this thought, with this foundation, we are going to attend the rest of the session. So let us ask a question to ourselves. What is mindset? Mindset hai kya? So we are talking about magical powers of growth mindset. तो वहां तक पहुंचने से पहले पता कर ले mindset है क्या? So mindset वही है, the lens through which we see the world. The lens through which you see the world. So if we talk about different kind of mindsets, it's all like you are wearing different kind of goggles with different shades of colors. अगर आपने ग्रीन पहन लिया तो आपको सब कुछ ग्रीन दिखेगा, अगर आपने ब्राउन पहन लिया तो सब कुछ ब्राउन दिखेगा. That is the purpose of a sunglass, है ना? वो सन को हटा के इवनिंग बना देता है. So though there is bright sun all around you, but you feel there is evening. After some time, the subconscious mind also starts believing that it's evening all around, and you also starts feeling cooling down. Because subconscious को वही दिख रहा है कि चारों तरफ अभी शाम का माहौल है. तो धीरे धीरे आपके बॉडी के जो बाकी फीलिंग है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है. And you more or less feel somewhat towards evening, though it's not exactly evening. Okay? So mindset is all about that. That means कि हमारे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, अगर हम अपना खाली माइंडसेट चेंज कर देते हैं, so the moment we change our mindset, we can see things with a different glass, different color of glass. Okay, a different power of glass. The whole objective of this entire workshop is to reset your mindset. That's why I started the whole session. Reset your mindset. Okay? तो हमें ये देखना है कि हम अपने माइंडसेट कहाँ पे रिसेट करें. तो रिसेट करने से पहले पता कर लेते हैं हमारा माइंडसेट कहाँ पे है. ठीक है? तो how mindset influences you. This is very, very interesting and important. First thing is think. Your thought patterns and beliefs. The way I just shared about that example of sunglass. आपका सोच बदल जाता है ना? आपके सोच के ढंग बदल जाता है. Your beliefs change. The belief has now become that it is not that sunny that it was earlier. The moment I wear the sunglass. Feeling भी बदल जाता है. Your emotions and reactions also change. है ना? And the third thing which happens is it affects your behavior. So your actions and decisions also change. So if सिर्फ एक सिंपल सा सनग्लास पहनने से अगर इतना कुछ होता है, तो सोच अगर आपका थॉट में भी वो बदलाव लाते हैं, अगर आपने माइंडसेट चेंज कर दिया तो क्या क्या हो सकता है या क्या क्या नहीं हो सकता है ना. So let's look at what kind of mindsets are there. The very first mindset is all about scarcity mindset या lack mindset जिसको बोलते हैं. Like क्या नहीं है. So scarcity mindset is a belief that there are limited resources available and therefore you must compete with others to get what you need. तो बहुत ही कम resources available है, तो आप किसी और के साथ competition में चले जाओ, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला है. ठीक है? यह scarcity mindset. This mindset often leads to feelings of fear, anxiety and stress. यार उसको मार्क्स मिल गया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं मिला? उसको मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला? 80 रुपीज किलो प्याज है, अभी कहीं पे गवर्नमेंट बेच रहा है 25 रुपए किलो. मैं जब तक गई तब मेरे को नहीं मिला, किसी और को मिल गया. कैसे मिल गया? People with a scarcity mindset tend to focus on what they don't have rather than what they do have. Okay? As we go through this entire training or entire workshops, keep on focusing कि आपका सोच विचार कैसा है. ठीक है? You don't need to share it with me, you don't need to share it with anybody, but do share it with yourself. इसमें से कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि आपका सोच विचार बिल्कुल ऐसा ही है, you take a piece of paper and a pen and note it down कि हाँ ये मेरे साथ मैच करता है. Okay? Key characteristics of a scarcity mindset: fear of loss, constantly worrying about losing what you already have. Hoarding, difficulty sharing resources or possessions. किसी को नहीं दूंगा, मेरे पास रख दूंगा. Competition, viewing others as threats rather than potential collaborators. है ना? मेरे पड़ोसी भी सीए बन गया, मैं भी सीए बन गई, अब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, पता नहीं जॉब किसको मिलेगा.
इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेटिंग आई एम कम्पीटिंग, तो उससे बेहतर मेरा इंटरव्यू होना चाहिए, जॉब उसको नहीं मुझे मिलना चाहिए. ओके. और इवन इफ यू स्टार्ट अ शॉप और यू जस्ट ओपन अ कंसल्टेंसी, और आपके पड़ोस में एक और सीए ने आके दुकान खोल दिया, नाउ यू आर वंडरिंग यार ये तो मेरे क्लाइंट्स लेके चले जाएंगे, है ना. लेकिन ऐसा कभी हुआ है कोई भी बैंक लॉस में चल रहा है? देयर आर सो मेनी बैंक्स इन द सेम प्लेस, इन द सेम एरिया, सारे बैंक्स दबा के चल रहे हैं, और बैंक्स में भी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, उनमें से सीए को सीएस को भी जरूरत होती है ना. सो इफ इट इज हैपनिंग विद बैंक्स, इमेजिन दे आर डीलिंग विद सो मच ऑफ मनी, crores and crores and crores and crores ऑफ मनी. अगर उनके पास ये थ्रेट नहीं है, इफ दे आर ऑल डूइंग गुड बिजनेस, आप सबके लिए गुड बिजनेस करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. सो इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्कैरसिटी माइंडसेट, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व. आप खाली ऑब्जर्व कीजिए, अवेयर रहिए कि ऐसा सोच आपका है. We are talking about short term thinking. They focusing on immediate needs rather than long term things. इनको खाली अभी के सोच में वो डूबे रहते हैं, like daily laborers, daily wage earners, है ना. उनका आज का दिन का मतलब है. So that's why they work throughout the day, और उनको उसी दिन का पगार मिलता है, उसी से अपना जिंदगी के बारे में सोचता है, घर जाता है, खाता पीता जो भी करता है करता है. But his whole life is focusing on that day's wages. ठीक है, that is short term thinking. Jealousy, है ना. उसके पास मारुति है, मेरे पास नहीं है. मेरे पास स्कूटर है, उसके पास गाड़ी लगाने का जगह भी है, मेरे पास गाड़ी खरीदूंगा भी तो जगह नहीं है गाड़ी लगाने का, है ना. मेरा घर ही इतना छोटा, आंगन ही इतना छोटा. तो jealousy, resenting the success of others. Yeah, if this is any of these thoughts are going in your mind, nothing wrong with that, just be aware of it. Okay, because we are going to experience the magic of life. Fixed mindset, ये हो गया second type of mindset. ठीक है, तो first one is scarcity mindset, दूसरा fixed mindset. A fixed mindset is the belief that your qualities like intelligence or talent are static and unchangeable. Okay, so people with a fixed mindset often believe that you are either born good at something or you aren't. They tend to avoid challenges, give up easily, and see effort as a sign of lack of ability. ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ होता है कभी कभी, तो आप समझ लेने को उन एरियाज में आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स माइंडसेट है. ठीक है, फिक्स माइंडसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट थिंग इज बिलीफ इन इनेट एबिलिटीज. ये लोग सोचते हैं कि टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर फिक्स्ड एट बर्थ. मतलब जिसके जो टैलेंटेड है, जिसका इंटेलिजेंस है, दुनिया उसी के लिए है. एंड इफ दे थिंक दैट आई एम नॉट टैलेंटेड और इंटेलिजेंट इनफ, तो द अदर गाय विल ऑलवेज गेट अ प्रेसिडेंस if both of us apply for the same thing. Fear of failure. Now this is different kind of fear of failure. It's avoiding challenges to protect self-esteem. है ना, कोई चैलेंज लेने का नहीं है भाई, जहाँ पे हूँ ठीक हूँ, मेरे को आगे कुछ करना नहीं है. चलो यार, तुम इन्वेस्टमेंट की बात करो, ठीक है, थोड़ा पैसा फिक्स सेविंग से उठा के फिक्स डिपॉजिट में डाल देता हूँ. आई एम हैप्पी विथ माई एफडी. भाई मुझे म्यूचुअल फंड में लगाना नहीं है, मार्केट में लगाना नहीं, तो तू लगा. आई एम हैप्पी विथ माई एफडी. उसमें इंटरेस्ट लगेगा तो भी ठीक है, उससे मेरा टैक्स कटेगा तो भी ठीक है, लेकिन मैं फिक्स डिपॉजिट में ही खुश हूं. ठीक है. फोकस ऑन प्रूविंग वन सेल्फ, कॉन्स्टेंटली नीडिंग वैलिडेशन फ्रॉम सेल्फ और अदर्स. उनको ना हर चीज के लिए वैलिडेशन चाहिए, लाइक थंब चाहिए. मैंने एक मैसेज डाला व्हाट्सएप में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, मेरे को कम से कम कुछ लाइक्स चाहिए. अगर लोग लाइक नहीं कर रहे तो यार मैंने क्या डाला, क्या वैल्यू रहा मेरा, है ना. सो दे आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन. Effort is unnecessary. Belief that success is solely based on talent. उनको लगता है कि जो टैलेंटेड है वो अगर एफोर्ट डाले तो उसको रिजल्ट मिलेगा. अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं कुछ भी एफोर्ट डालूं तो मुझे कुछ मिलने वाला है. तो जिनके पास टैलेंट नहीं है वो कितना भी एफोर्ट डाल ले, they cannot compete with people who are already talented or who are already intelligent. Then comes the average mindset. An average mindset is characterized by a lack of ambition or drive to exceed the norm. ठीक है, कोई एम्बिशन नहीं है यार, चलो जो चल रहा है ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेंगे. सो पीपल विद एन एवरेज माइंडसेट टेंड टू बी कंफर्टेबल विद मीडियोक्रिटी एंड मे रेजिस्ट स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ देयर कंफर्ट जोन. ठीक है, अगर आप में से किसी भी अगर ऐसा सोच विचार है, दैट मींस यू आर क्लोज टू एवरेज माइंडसेट. ओके, वेयरएवर यू आर, डिस्कवर योरसेल्फ. बिकॉज़ दीज थ्री स्टेजेस जो अभी हमने बात किया, starting with scarcity mindset followed by fixed mindset and average mindset, इन तीनों में से कोई भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका मैच कर रहा है, आपके साथ मैच कर रहा है,
तो वो आपके लिए आज की डेट में, इफ आई टॉक अबाउट टुडे, यू आर रियली ब्लेस्ड कि कम से कम आज आपको पता चला। तो देखते हैं एवरेज माइंडसेट वाले लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। इनका भी फियर ऑफ फेलियर है, लेकिन इनका फियर ऑफ फेलियर कुछ अलग टाइप का है। अवॉइडिंग चैलेंजेस टू मेंटेन स्टेटस को, जैसा हूं वैसा ही ठीक है भाई, मेरे को ज्यादा चैलेंज मैंने लेने की जरूरत नहीं। आई एम हैप्पी विद ट्रैवलिंग इन अ बस, आई डोंट वांट टू ट्रैवल इन ऑटो, है ना। लो एक्सपेक्टेशन, बिलीविंग दैट एवरेज रिजल्ट्स आर सफिशिएंट, जो है ठीक है, सीए पास करके काफी है, आगे देखा जाएगा, जॉब वॉब मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं तो कोई प्रैक्टिस खुद करने वाला हूँ, कहीं जॉब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं कुछ और कर लूँ, ऐसे भी होते हैं। लैक ऑफ एम्बिशन, so they are not setting high goals or striving for excellence. अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा है तो it's okay that you at least got to know about it today. And blame external factors, attributing failures to circumstances rather than personal actions. सर मैं इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, सर मैं इसलिए नहीं पहुंच पाया कि मेरा बस खराब हो गया था, सर मैं इसलिए नहीं पहुंच पाया कि आज दूध वाला टाइम पे दूध दे के नहीं गया, है ना। So if any of you have this habit, it's okay, just catch yourself, it's all about average mindset. और इन जो तीनों टाइप का माइंडसेट की बात कर रहे हैं अभी तक, ये तीनों टाइप ऑफ जो माइंडसेट्स हैं, they do not allow you to move forward. या तो उसकी वजह से आप जहां पे वहीं रह जाओगे, थोड़ा बहुत आगे जा सकते हैं एक दो कदम, या तो पीछे चले जाओगे। पीछे चले जाने का मतलब ये है कि आगे जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है आप उस तरह से नहीं बढ़ रहे हो, इसकी वजह से आप पीछे चले जा रहे हो, ठीक है। यू आर रनिंग अलोंगसाइड बुलॉक कार्ट, तो ठीक है, बुलॉक कार्ट के साथ आप रन कर सकते हो, इट्स ओके। लेकिन बुलॉक कार्ट में जब एक घोड़ा लग जाएगा तो आप उसके साथ दौड़ नहीं सकते, चाहे आप कितना ही मेहनत कर लो। तो घोड़ा जैसा दौड़ने के लिए आपको घोड़ा जैसा इंटेंशन होना चाहिए, है ना। सो व्हाट यू कैन डू, चलो तू घोड़ा है, चल मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, चलो मैंने साइकिल ले लिया, फिर भी ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को अपग्रेड किया, अपस्किल किया, है ना। सो बट डोंट ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स कि मैं क्या करूं यार, पहले तो बैल गाड़ी चलाता था, अब वो तो घोड़ा लगा लिया, मैं भैंस करूं, है ना। So this is what is happening in your life. If you are a victim of this, it's okay that now at least you are aware of it. Okay. So if you have any question up to here, you can ask me. If you have any question up to here, and rather I will tell you, if you have any question up to here, don't ask me. क्योंकि पूछने से कोई फायदा नहीं है, आप जहां हो वहीं रहोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मैजिक ऑफ लाइफ बिगिंस फ्रॉम हियर। अब हम आगे का जो बातें करने जा रहे हैं, यहाँ से हमारे जिंदगी में मैजिक शुरू होने वाला है। एंड नेक्स्ट 20 to 25 minutes are going to be extremely crucial for each one of you, including me, क्योंकि मैं भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं भी साथ साथ सीख ही रहा हूँ कुछ ना कुछ, है ना। सो पे फुल अटेंशन, पे फुल अटेंशन, जितना अटेंशन हो सका अभी यहीं पे डालिए, ठीक है। सब कुछ भूल के यहीं पे अटेंशन डालिए। अगर पावर चली गई है, पंखा नहीं चल रहा है, तो पंखा पे ध्यान मत दीजिए, ना पावर पे ध्यान दीजिए। अगर मोबाइल चल रहा है, बैटरी सही है, बस अटेंड कीजिए। एंड फिर अटेंडिंग ऑन अ लैपटॉप, फिर तो तौबा तौबा, ऑसम। सो हियर वी गो। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? A growth mindset is the belief that your abilities and intelligence can be developed through dedication and hard work. Very important, can be developed मतलब आप अपना कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हो। और ये कैसे बढ़ा सकते हो जानते हैं? इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आई थॉट अबाउट शेयरिंग इट इन द लास्ट वीक व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट reframing, but I kept it for today. Okay, so those who are not attending today's session but attended last session, they are missing out on this. You know, anytime when you say that, okay, let me put it this way, how many of you think that you can't do something? ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप बोलते थे I can't do this or I am not good at this? Anything that you would like to talk about? आप खुद बोल सकते हैं अभी right now. We can take 1 minute and you can just share that I can't do this or I can't do that, whatever. Is there is anything specific? Be clear about it, be open about it, nothing wrong about it, ठीक है। उससे आप छोटे नहीं हो जाओ। अगर आपको कुछ नहीं करना आता है, there is nothing wrong with that. दुनिया का सारा काम आपको ही करना आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। If there is anything which you want to share that I can't do this, you can say. हो सकता है कि I can't drive a car, ये भी हो सकता है उसमें,
और I can't find a good job, I can't be good in interview. अगर ऐसा कुछ है, Sir, technology, computer. okay, so what do you mean by that? You have to use this word I can't. आप Okay. exactly I can't, फिर आगे का बोलिए, I cannot. I cannot use technology for my benefit. Good. Who else? Who else? मुझे कम से कम 4-5 और चाहिए, पता चले कि लोग जागे हुए हैं, सो नहीं रहे हो. मतलब अभी क्विकली हमें वो तीनों माइंडसेट से निकलना है. फिक्स्ड, एवरेज और तीसरा क्या बोला था? एवरेज से आने से पहले, फिक्स के आने से पहले स्कैरसिटी, लैक, है ना? तो स्कैरसिटी, फिक्स्ड और एवरेज, इन तीनों से अभी हमें निकलना है. सो आई वांट टू लिसन टू 5 मोर. चैट, चलो आप चैट में डाल लो, मैं चैट देखता नहीं ना. चलो देख लेता. आई कांट अर्न विथ ट्रेनिंग्स लाइक, अच्छा ट्रेनिंग से मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, ठीक है. आई कांट से नो टू एनी, ओ दिस इज द मोस्ट फेमस वन. यस. आई कांट गेट गुड स्टाफ, गुड. आई कांट लर्न फैक्ट्स, ठीक है. और Sir, can I go out of the field and say? ये यू से आई कांट कुक राइस, ये भी बोल सकते हो. No, no, I'm not good at mathematics. डोंट से दैट आई एम नॉट गुड एट, से आई कांट. I can't. आई कांट बोल के आप कुछ बोलिए, जो भी बोल रहा है आई कांट बोल. Sir, I can't ride cycle. Okay, I can ride a bicycle. Wonderful, wonderful, wonderful. Who else? Who else? ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है ना. ढूंढ, निकालो निकालो. I can't speak English. Oh, lovely. ये मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है. This is one of my favorites. I can't speak English. मुझे अभी भी लगता है कि I can't speak. और जब भी ये थॉट आता है ना मेरे दिमाग में, मैं सही तरह से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, तुरंत आई गेट बैक टू हिंदी और मैं अपने आप को कंफर्ट लेवल लेके जाता हूँ. एंड आई एम वेरी गुड एट इट. यस. Good, good, good. Now. Fantastic, fantastic. Now reframe this statement. Reframe this statement. ये जितने भी आपने बोला, I can't express myself in public, I can't speak in public, I can't drive an aeroplane. Absolutely. ये जो वर्ड है ना, जो स्टेटमेंट है, इसको खाली थोड़ा सा चेंज करना है. I can't के जगह खाली बोलना है how can I. खाली इतना सा बोलना है. और लास्ट में जो फुल स्टॉप था उसको क्वेश्चन मार्क में बदलना है. क्योंकि आई कांट जो है ना, वो तीनों जो हमने अभी तीनों माइंडसेट की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग विद स्कैरसिटी, स्टार्टिंग विद टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड माइंडसेट, देन टॉकिंग अबाउट एवरेज माइंडसेट, ये तीनों के केस में ये सब आई कांट का ही मामला है. एंड द मोमेंट यू यूज द वर्ड हाउ कैन आई replacing I can't, you just move from those three mindsets towards a growth mindset. बहुत आसान है growth mindset develop कर. Just with these 3 words you can develop growth mindset in any area of your life. टर्निंग पॉइंट है कि नहीं? अगर है तो टीपी लिखिए. In the chat box write TP. So 49 people attending the session. कम से कम 9:30, 4:30 इतने टीपीस तो दिखने चाहिए. How can I convince others with my thinking? Yeah, absolutely. It's all about how can I? How can I? Yeah. How many TPs? 2, 3 only. भाई जाग जाओ, जाग जाओ. You are getting a turning point in your life. Write TP only if you think that it's a turning point in your life. जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं, है ना? Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. अभी आगे से कोई भी कभी आपको किसी ने बोला ना कि I can't, तुरंत उसको ये सवाल पूछो. Good that you can't, but how can you do that? Now अब बताओ, अब बताओ. Yeah. So if you are working under great leaders, you have noticed that if you have told them any time that I can't, तुरंत वो आपको ऐसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, प्यार से बोलते हैं. So how can you do that? How can you make it happen? आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, but now you can notice, है ना? And anywhere in any area where you're getting stuck,
and this आपके अंदर से ये बात निकल रहा है कि I cannot do this, just replace that. I cannot with how can I do this? How can I get away from this? How can I manage this situation? And the moment you say that how can I, your subconscious starts acting. It starts connecting to all the resources that you have access to. तो ढूंढ के निकाल लेता है. इसमें अगर I have to get out of it, what are the options I have? All right. So let's proceed further. A growth mindset is the belief that your abilities and intelligence can be developed through dedication and hard work. People with a growth mindset view challenges as opportunities to learn and grow rather than as threats. They believe that abilities can be developed through dedication and hard work. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप इस मोड में जितना जल्दी हो सके आ जाइए. This is the starting point. ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट का मैजिक शुरू होता है जस्ट विद these 3 words, हाउ कैन आई. है ना, कोई आपको थ्रेट लग रहा है, हाउ कैन आई टैकल दिस थ्रेट, हाउ कैन आई टेक अप दिस चैलेंज, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. Any problem is coming in your life, just asking a question, how can I? सब कुछ is how can I. It's all about how can I. Growth mindset is fundamentally is all about how can I. है ना, पिनाकी सर का ये प्रेजेंटेशन लेके हाउ कैन आई गिव अ प्रेजेंटेशन टू माय स्टाफ, टू माय टीम मेंबर्स, क्योंकि ये तो वो अभी थोड़ी देर बाद हमें फ्री में दे ही देंगे, पूरा पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, है ना, ये रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, खाली इसको याद करना है, स्क्रीनशॉट लेना और डिलीवर करना. हाउ कैन आई डू दैट? एंड इफ आई डू दैट फॉर वन पर्सन, I am practicing it for myself. If I do it for 2 people, I am practicing it second time. If I do it for 10 people, I will become masterpiece in managing mindsets. इसीलिए पिनाकी सर ने लिख के रखा है, मैं माइंडसेट ट्रेनर. अच्छा, तो ये बात है, असली बात पिनाकी जी का यही है, यही एक प्रेजेंटेशन लेके सबका माइंडसेट चेंज करते रहते. ओह माय गॉड, खाली शब्दों का खेल. कूल, ऑसम, थैंक यू पिनाकी सर. सो ग्रोथ माइंडसेट वालों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द फर्स्ट थिंग इज बिलीफ इन डेवलपमेंट. एबिलिटीज कैन बी इंप्रूव्ड थ्रू एफर्ट एंड लर्न. They believe in this. They are ready to embrace challenges. Challenges are seen as opportunities for growth. कोई भी challenge आता है, they look forward to what is the opportunity for me there. They learn from setbacks. You know, one of the promises of this entire program is setbacks to comebacks and then bounce back. You will learn that ability. उस रास्ते में आपका पहला कदम है how can I. The moment you are in a setback state, you just need to ask yourself, how can I come back from this setback? एक सवाल, आपको किसी और से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से एनकरेजमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से एम्पावरमेंट लेने की जरूरत नहीं है. You can simply encourage, motivate, inspire yourself just simply by asking a question, how can I come back from this setback now? It's as simple as that. So failures are viewed as learning experiences. Persistence, effort and dedication are key to success, no doubt about it. अगर आपको फेल भी होना है तब भी आपको एफर्ट और डेडिकेशन देना पड़ेगा फेल होने के लिए, है ना. जहां जहां पे आपने फेल किया, आप देखना, आपने बहुत मेहनत किया फेल होने के लिए, आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, आपने लेजीनेस दिखाया, आपने पढ़ाई नहीं किया, उस टाइम पे आप नेटफ्लिक्स देख रहे थे, आपने सारा कुछ किया विथ फुल परसिस्टेंस टू इंश्योर दैट यू फेल इन दैट पेपर और यू फेल इन दैट एक्टिविटी, है ना. लोग ऐसे फेल नहीं होते हैं, वो पूरी तैयारी करते हैं तब जाके फेल होते हैं. They become successful in becoming a failure. वही सक्सेस प्रिंसिपल अगर उसने किसी चीज में सक्सेस होने के लिए अप्लाई कर दिया तो उसमें सक्सेस होकर निकल जाएगा. प्रिंसिपल इज सेम. The same principle that you apply for being a failure is exactly the same principle you can apply to become successful in any area, because being a failure is also success. You successfully becoming a failure. Okay? मेरे भाषा में failure यही है. And these people are open to feedback. Their willingness to learn from others. ये उनका सबसे बड़ा क्वालिटी होता है. अगर आपके अंदर ये पांचों क्वालिटी है, एक्सेलेंट. नहीं है तो फटाफट लेके आ जाइए, आज ही से शुरू कर दीजिए. जस्ट रीसेट योर माइंडसेट, है ना. इट्स लाइक हाउ कैन आई बिलीव इन डेवलपमेंट, हाउ कैन आई एम्ब्रेस चैलेंज, हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम सेटबैक्स, हाउ कैन आई बिकम परसिस्टेंट एंड हाउ कैन आई बिकम ओपन टू फीडबैक. बस यही तो सवाल पूछना है, जवाब मिल जाएगा. जवाब मिल गया तो यू आर ऑन योर रूट, ऑन योर वे टू सक्सेस.
ठीक है, ये होगा ग्रोथ माइंडसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू जर्नी. From growth mindset, we are moving to another mindset, which is called elite mindset. बहुत सुंदर है ये. An elite mindset is a combination of a growth mindset and an exceptional level of ambition, determination, and focus. कोई शक अगर है तो शक को मिटा लीजिए. जितने भी लोगों का आपको लगता है कि इसका माइंडसेट एलीट है, उसके पीछे यही वाला थॉट काम करता है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ माइंडसेट एंड an exceptional level of ambition, determination, and focus. है ना. इसका एग्जाम्पल हमारे सामने ही है. सीए डॉक्टर राजकुमार अदुकिया, पूरा इसका एग्जाम्पल है. Not only growth mindset, but an exceptional level of ambition, determination, and focus. It's a mentality of high performers who consistently strive for excellence and are willing to go beyond the ordinary. Extraordinary हमने सुना है ना. Extraordinary ordinary में सिर्फ उतना सा ही फर्क, वो छोटा सा फर्क होता है. एक्स्ट्रा कोई खास फर्क नहीं होता. ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत बढ़िया कुछ चीज है, ऐसा कुछ नहीं. हल्का सा फर्क होता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एम्बिशन, डिटर्मिनेशन एंड फोकस, बस इतना सा फर्क होता है. तो एलीट माइंडसेट वालों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? First thing is unwavering belief in potential, a deep-seated conviction that they can achieve extraordinary things. कोई शक है नहीं. Extreme focus and discipline, an intense concentration on goals, and a relentless pursuit of mastery. Resilience and perseverance, the ability to overcome setbacks and maintain a positive outcome. Competitive drive, a strong desire to be the best and outperform others. Continuous learning, a relentless pursuit of knowledge and skill development. अदुकिया सर आज भी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं 2 सब्जेक्ट पे. एक है साइकोलॉजी, एक है इकोनॉमिक्स. कैन यू इमेजिन? A relentless pursuit of knowledge and skill development. आप देखना ये सब उनके साथ मैच करता है, और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ ये मैच करता है. That's why they are who they are. Elite mindset. है ना. तो अगर हमें ऐसा बनना है, क्या करना है? How can I, खाली इसके पहले ऐड करना. How can I create unwavering belief in potential for myself? How can I be extremely focused and disciplined? How can I be resilience and perseverance? Masterpiece of resilience and perseverance. How can I have a strong desire to be the best and outperform. सब कुछ all about how can I. Okay? Elite mindset के बाद एक और mindset आता है. Sorry, ये मैं मिस कर गया था. Risk taking attitude, a willingness to step outside of comfort zones to achieve ambitious goals. है ना. मजा आ रहा है? टर्निंग पॉइंट्स डेवलप हो रहे हैं थॉट्स में, लाइफ में. कुछ टीपीस और देख सकता हूं? Can I see some more TPs? If you are actually experiencing it, मुझे खुश करने के लिए मत डालिए. Thank you. Good. Thank you so much. So much. I am so blessed. Deep gratitude. Cool. Let's carry on. Elite mindset के बाद आता है abundance mindset. क्या बात है पिनाकी सर, क्या बात है. कहां से कहां लेके जा रहे हो. हमने अभी तक abundance mindset खाली सुना है, हमने मैजिक बुक पढ़ा है, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, सुना है, इतने वीडियोस देख रहे हैं. लेकिन आज हमें पता चलेगा एबंडेंस माइंडसेट तक पहुंचने के लिए हमें कहां से शुरू करना पड़ेगा. क्यों इतना कुछ चाहते हुए भी हम नहीं पहुंच पाते स्टेट ऑफ माइंड. ये माइंडसेट क्यों हम लोग डेवलप नहीं कर पाते. कर भी लेते तो हाउ कैन वी सस्टेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्यों नहीं कर पाते, है ना. सो नाउ यू कैन स्टार्ट ऑल दिस क्वेश्चंस विद हाउ कैन आई. इंस्टेड ऑफ सेइंग क्यों नहीं कर पाते, यू विल स्टार्ट विद हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं. Okay, so let's look at abundance mindset. An abundance mindset is the belief that there is enough for everyone.
सबके लिए बहुत है सबके लिए. It's a perspective that focuses on the idea that resources, opportunities, and success are plentiful. People with an abundance mindset tend to be more generous, collaborative, and optimistic. आज मैंने एक मेरा पॉडकास्ट रिलीज किया है. अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर है तो मेरे प्रोफाइल में आपको दिख जाएगा स्टेटस में, नहीं तो मैं सर से परमिशन लेके आपके ग्रुप में डाल दूंगा. मैं आपको सबको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको सुनना. It's a small video about 16 minutes. You only need to listen to it. देखने के लिए कुछ है नहीं, खाली सुनने के लिए. बहुत अच्छा लगेगा. I strongly would recommend you to watch that. मैं सर से परमिशन लेके डाल दूंगा. So, abundant mindset वालों का characteristics कैसा होता है? They have a belief in shared prosperity. The idea that everyone can succeed and thrive. Generosity, a willingness to share resources and knowledge. मेरे पास है, मैं तुझे नहीं दूंगा, ये नहीं है. मेरे पास है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, ले जा. लेकिन सिर्फ लेके अपने पास मत रख देना, आगे भी लोगों को देता रहे. जैसे I just said, I'm sharing this whole video with you, I'm sharing this whole PPT with you. You can go and take out, practice, and start making differences in people's life. And see what happens. Collaboration, working together to achieve mutual goals. Optimism, a positive outlook on life and its possibilities. And gratitude, appreciating what you have rather than focusing on what you lack or what you don't have. Okay? आगे बढ़े. Prosperity mindset. ऐसा भी कुछ होता है क्या? सर हम कहाँ से आ गए? आप तो खाली ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे थे. जब ग्रोथ माइंडसेट काम करना शुरू करता है ना, तब ऐसा ही होता रहता है. Actually, magic starts happening in your life. That's why the topic of this session is magical powers of growth mindset. So prosperity mindset क्या है? It's a strong belief in abundance, possibility, and growth. Abundance mindset से भी थोड़ा सा आगे बढ़. Abundance मतलब क्या है कि सबके पास है, enough है. Prosperity कहता है कि it's a strong belief, not only about abundance, but possibility and growth as well. कि अगर ये किसी और के लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए पॉसिबल है, अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो किसी और के लिए भी पॉसिबल है ना. It's about shifting from a scarcity mentality, believing there is not enough, to an abundance mentality, believing there is plenty for everyone, including myself. सबके लिए है, including myself, मुझे include कर. What are the characteristics? First is abundance mentality, believing there is enough for everyone to succeed, which we just talked about, followed by a positive outlook, focusing on opportunities rather than limitations. Abundance mindset में हम opportunities की बात नहीं करते हैं. Abundance mindset में हम बोलते हैं सब कुछ हमारे पास है. Prosperity mindset is taking it at just one step ahead. Okay, it's focusing on opportunity rather than limitations. मेरा limitations कहाँ पे, वहाँ पे focus ना करके हम opportunity पे focus करें. कहाँ से हमें abundance मिल सकता है? जहाँ पे limitation है वहाँ पे भी abundance से limitations, उसको भी कम नहीं है. लेकिन उसमें जहाँ जहाँ पे हम opportunity देखेंगे, उस opportunity में कहाँ कहाँ पे मेरे पास abundance है, वो हमें देखना है. We are talking about goal orientation, like setting clear and ambitious goals. Okay, we will do a session on goal setting someday. मैंने सबसे पहले session CS के साथ goal setting के ऊपर ही किया था, and I know it was a huge success, and I'll repeat that session. Okay, definitely repeat that session. Now since I have got an opportunity to go in a structured way, so मैं एक structured process apply कर रहा हूँ, structured process follow कर रहा हूँ. ठीक है, so we started with reframing. We are continuing with mindset. We'll do some more
other output oriented activities, so that हम अपनी पूरी ground work कर ले, पूरी तैयारी के साथ बैठे, हमें बड़ा गेम खेलने जा रहा है, so हम बड़ा गेम की तैयारी करके जाए. Okay. And so goal setting is all about setting clear and ambitious goals, and financial intelligence, very, very important. Understanding money and how to make it work for you. This is a part of prosperity mindset. और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि वो आप जन्म के साथ आपको नहीं मिलता, वो आपको एक्वायर करना पड़ता है. यू डू नॉट बॉर्न विद दिस इंटेलिजेंस, है ना, यू नीड टू एक्वायर इट. उसके लिए भी आपको वो माइंडसेट चाहिए कि हाँ, मैं हाउ कैन आई बिकम फाइनेंशियली इंटेलिजेंट. So everything is all about how can I. Last thing is giving back, sharing your success with others. You know, this is this last point because of which जो भी मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ, जो भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं हर एक को बोलता हूँ मेरा कोई मटेरियल कॉपीराइटेड नहीं है. So none of these are my own creations. I have picked it from some books, some videos, some audio, some write-ups. कहीं ना कहीं से मैं इंफॉर्मेशन उठाया हूँ. तो none of these are my copyright. इसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है. और वही just that one thought gives me that power कि आप इसी प्रेजेंटेशन को लाओ, लेके जाओ और किसी को भी जाओ जाके सिखाओ. I have no objection. Okay. So here are some top 10 NLP books that you can read, which I shared last time also. Thank you so much. That's all I have to say. Good. 1650. कर दिया यार 50 मिनट में. Good. Pat on my back. Good job. Any questions? Wonderful. I don't have words to this session. मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, प्लीज. I'll to use this in class. Okay. Though on my screen it comes Suhas, that's my husband's name. It was a wonderful session, and let me tell you a few of these things I have been using in class when I teach them communication skills, because they're always hesitant to express themselves. Though I did not know the technical words, but I changed them from zero to a very positive mindset. So by the end of the class, they do respond in a nice manner. Anyway, your words and I think choice of words and segregation and structured teaching will be very useful. And I'm grateful to you. And I'm sure I'm saying this on behalf of all the participants and all the listeners. Thank you so much. Thank you so much. Hello. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Gratitude. Who else? Thank you, sir, for amazing session from Nivedita. Thank you so much. Nivedita, see, everybody, all of you can actually just unmute and talk. You know, बात करने का मजा कुछ और होता है ना. जब आपके अंदर से शब्द निकलता है ना, आपको अजीब सा फीलिंग होगा. You will actually feeling like saying thank you. Thank you for the wonderful session, sir. Actually, many of the things what you had mentioned, like we had read or heard here and there, but you are compiled in such a beautiful way. I mean, that everything, the gist of it gets understood very, very fast, and very, very elaborate way of teaching. Thank you from the bottom of my heart for the wonderful session, sir. God bless you. God bless everyone, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Very nice session it was. I have heard this abundance mindset first time. Thank you. Thank you for the new concept. Thank you so much, Jayanti Kulkarni ji. Sir, namaste, sir. It was like a beautiful journey from scarcity to prosperity. Really loved each and every step of the way you were taking us.
It was wonderful, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Sarvamangala. My only request is आप ना इसको practice करो 1 हफ्ता, just for 1 week. ज़्यादा दिन करने की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ता करो, but with full honesty, with full dedication, with full determination, with full integrity. Only 1 week. Sure, sir. Put everything aside. है ना, अभी तो आप लोग बहुत साल जिएंगे, कम से कम कोई 50 साल जिएंगे, कोई 60 साल जिएंगे. I have traveled around the sun only 54 times so far. So many of you will be traveling more. उसमें से 7 दिन निकाल लीजिए अपने, just for working on this, whatever I shared with you. And then you see what happens. और भी अच्छा होगा आप किसी को सिखाना शुरू कर देंगे तो सब कुछ आपके हाथ में ही, खाली स्लाइड दिखाना है और पढ़ के सुनाना है ना. Do it and see what happens. You will be amazed, I'm telling you. आप धीरे धीरे वैसा बनना शुरू हो जाएगा. Yeah, who else? Anybody, please? अरे बहुत टाइम, हमारे पास 6 minutes है अभी सर आने से पहले. Pinaki sir, I believe that all the people who are not attending your session today and they have attended your first session, they're definitely missing out on many important things you have told us in today's session. And I personally believe that mindset is the most underrated thing, but yet it is the most powerful thing in this whole world. So it was an amazing session by you, and very engaging, very interactive, and it was full of humor and relatable things. Thank you. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much, C.A. Gyati. My pleasure. It has been the Olympics of our thoughts. Now this is the Olympic season, no? Absolutely. Somebody's rifle didn't work and she was disqualified, and she waited 4 years. Olympics of our thoughts, which will, so excellence, that's what I mean. Thank you so much. Actually, everybody is in a meditative state right now. That's why they are not asking any questions. They are only receiving. मिल रहा है लेते जाओ, मिल रहा है लेते जाओ, मिल रहा है लेते जाओ. जैसे रुचि मैम अपने सेशंस में दिखाती हैं, मिल रहा है लेते जाओ, मिल रहा है लेते जाओ. Exactly वही हो रहा है. Sir, Pinaki sir, I have one question. Yes, ma'am. कि कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में बहुत स्ट्रांगली कोई चीज चाह रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट वो मिल ही नहीं रही है डिस्पाइट लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो ऐसा क्यों है? मतलब मैनिफेस्टेशन भी प्रॉपर है, सारी चीजें हैं, बट इट इज नॉट मटेरियलाइजिंग. आप बोल क्या रहते हैं उस टाइम जब आप उसको मांगती हैं? आप बोलती क्या हैं? अभिषेक बच्चन की शादी का है, जिस दिन अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी. सर मैं आप बोलती क्या है उस टाइम? आप जब जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, तो व्हाट डू से, व्हाट डू टॉक, व्हाट डू आस्क फॉर? सर आई पॉजिटिवली अफर्म इट, लाइक एग्जैक्टली बोलिए, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. लाइक सर, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब देयर आर 2 to 3 थिंग्स इन माय लाइफ राइट नाउ व्हिच आर नॉट गेटिंग कंप्लीटेड. तो जैसे अभी कुकिंग है, तो मैंने आज तक सीखी ही नहीं, मतलब वो सीख ही नहीं पाई, और जिसमें मेरा बहुत मन करता है कि मेरे को कुक करना चाहिए. सो ये चीज है सर. हाँ, तो उसके पहले 3 शब्द लगा दीजिए, हाउ कैन आई, और शुरू कीजिए हाउ कैन आई बॉयल वाटर. कुकिंग शुरू हो जाएगा. Sir, I have a small difficulty. You gave us types of mindsets. They are not fully compartmentalized, but I think, do they overlap each other a little bit? Yes, ma'am. Actually क्या है कि they are all related or connected to somewhat, some way each other. लेकिन सीक्वेंस वही है, जिस सीक्वेंस में मैंने आपके साथ शेयर किया, सीक्वेंस वही है. The sequence is exactly right. It starts with scarcity, followed by आपका fixed mindset, followed by average mindset, followed by growth mindset, followed by elite mindset, followed by abundance mindset, followed by prosperity mindset. The sequence is same, but that definitely they are connected.
It's like moving from one zone to the other zone. बीच में एक common zone है. Thank you. So see again, you got the answer. You start with boiling the water. How can I boil the water? अब उसमें चावल डालेंगे तो चावल बन जाएगी. चाय पत्ती डालेंगे तो चाय बन जाएगी. है ना? So the next question will be how can I prepare tea or how can I prepare rice? It's all about how can I. Every time you ask this how can I, आपको जवाब मिल जाए. आपको किसी के पास जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं. Even the question that you asked me, I asked for abundance, I asked, but it didn't work for me. Ask the question that how can I achieve it? How can I get this? Sir, तो magic word से how can I? Absolutely. Mindset बदलने का magic word है how can I. Even like अगर आपको मतलब यूनिवर्स से भी मांगना है तो आप पूछो हाउ कैन आई, मतलब एग्जैक्टली कैसे बोलने से यूनिवर्स मुझे देगा. तो बच्चों का बच्चा कितना चालू होता है, वो आपके पास 18 बार जाएगा, लेकिन 18 बार वो 18 तरीके से आपसे पूछेगा. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही विल डिस्कवर दैट जब मैं ऐसे पूछता तो काम बनता है. तो नेक्स्ट टाइम वो हो सकता है 1-2 बार एक्सपेरिमेंट करें, 2-3 बार, लेकिन फोर्थ टाइम जब वो आपके पास जाएगा वो उसी लास्ट क्वेश्चन से ही जाएगा. But now he knows the how to ask so that I get this. हम कभी कभी हाउ पूछते हैं ये सोच के यूनिवर्स कैसे देगा. अरे वैसे मत सोचो यार. अमेज़न में तुम एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, सोचते हो क्या वो कहाँ से डिलीवरी होगा, कौन उसको बना रहा है. आप तो खाली पिक्चर देखते हो, ऑर्डर प्लेस कर देते हो. कभी देखना, उसको ट्रैक करके देखना प्रोडक्ट कहाँ से डिलीवरी हो रहा है. A few days back I ordered 4 items same day. सब प्राइम अकाउंट में ऑर्डर किया था. Everything was delivered today. All the deliveries were to be done on Thursday 1st August. मैंने चारों का डिलीवरी ट्रैक किया, कहाँ से आ रहा है. चाय का ऑर्डर किया, वो दार्जिलिंग से आ रहा है. एक दिन में आ तो गया, कैसे आ रहा है उसका मैं ट्रैक कर रहा हूँ. तो देखा जाए दार्जिलिंग से कहाँ से पिकअप हुआ. इट वेंट टू गुड़गांव बिफोर इट केम टू नोएडा. सो दे हैव देयर ओन सिस्टम. सिमिलरली यूनिवर्स के पास भी सब कुछ बना हुआ है, वो तो पैक करके रख दिया आपके लिए. आपको खाली पूछना है और एड्रेस देना है, भाई कहाँ पे डिलीवरी करना है. तो ऑर्डर कैसे करेगा वो आपका हाउ कैन आई वाला एरिया में आता है. डिलीवर कैसे होगा वो यूनिवर्स का हाउ कैन आई वाला एरिया है. उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना. हाउ कैन आई ऑर्डर सेम बुक. किसी कहीं पे प्राइस दिखा रहा है 168 रुपीज, कहीं पे प्राइस फ्लिपकार्ट में प्राइस दिखा रहा है 178. अब मुझे अगर 168 में खरीदना है तो आई विल प्लेस द ऑर्डर ऑन Amazon on. हाउ कैन आई ऑर्डर दिस बुक इफ आई वांट टू बाय फॉर 168. बोलो देखो जहाँ पे 168 में मिल रहा है वहीं पे ऑर्डर करना पड़ेगा. अगर आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करोगे तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा. हो सके डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा. Interesting? Yes, sir. It was Yes, very well put up. yes. It's all about how can I. जैसे रुचि मैम ने बोला, exactly it's all about how can I. It's all about how can I. अगर मुझे किसी पेपर में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना है तो क्वेश्चन इज हाउ कैन आई. 1 मार्क कैसे लाऊंगा. 1 मार्क लाना सीख गया तो मैं उसको 2 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ. तरीका सेम ही है, लेकिन वो तरीका क्या है वो मुझे सीखना पड़ेगा. हाउ कैन आई. Any more questions? या तो सवाल पूछो या तो मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करो. You know, like every time you talk good about somebody, you already have that quality inside you. आप उसी को आप एक्चुअली उसी के लिए आप क्लैप कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो है, इसीलिए वो आपको किसी और में दिख रहा है. It's a reflection that you see. So everything that you see good about Pinaki, you already have those qualities. Did you notice that I patted myself? कि देखो मैंने ठीक like 450 तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, है ना. It's just like this, appreciating yourself, acknowledging yourself. किसी और के पास जाने की जरूरत, कोई वैलिडेशन की जरूरत थोड़ी है. जो वैलिडेट कर रहा है पता नहीं वो वैलिडेट करने लायक भी है नहीं. वो जस्ट शायद आपको खुश करने के लिए, आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखने के लिए वो वैलिडेट कर रहा है, वो आपको एक थंब दिखा रहा है. All right, any more questions?
अच्छा मान लेते हैं, लेट अस थिंक दिस वे, मान लेते हैं कि आपके जितने भी वीक माइंडसेट्स हैं जो हम लोग पहले बात, दीज आर वीक माइंडसेट्स, राइट? So last session we talked about replacing weak word with not so strong words, है ना? So these are all weak mindsets. जो हम लैक माइंडसेट की बात कर रहे थे, स्कैरसिटी माइंडसेट की बात कर रहे थे, या हम जो फिक्स्ड माइंडसेट की बात कर रहे थे, एवरेज तक जो भी है, these are all weak mindsets. इससे आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंसान और इंसान की जिंदगी आपको जीने का हक है. If you are staying in those mindsets, है ना, पता ही नहीं चलेगा that you are also living, you are a human being, you are not just any other animal. भगवान ने आपको बनाया, सोचो कितना कुछ डाला है आपके अंदर. You are God's best creation. तो आपकी जिंदगी तो गुड से शुरू ही नहीं हो सकता, वो ग्रेट से शुरू होता है. हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, it doesn't start with good. You are already great. You are the best creation of God. तो फिर हम कर क्या रहे हैं? You are a spiritual being on a human journey on this earth. तो हमारा जर्नी कहाँ पे? जर्नी टुवर्ड्स एक्सेलेंस. एनएलपी में क्या है? एनएलपी इज ऑल अबाउट अ जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटनेस टू एक्सेलेंस. वी विल बी टचिंग ऑन एक्सेलेंस ऑफ एनएलपी. एनएलपी में उसका जो फाउंडेशन उसको बोलते हैं बिलीफ्स ऑफ एक्सेलेंस. उसका टेक्निकल नाम है प्रीसपोजिशंस ऑफ एनएलपी. लेकिन उसका Yes, sir. You have connected us to better things in life, like that bridge behind you, which is connecting one end to the other. Good that you could find that analogy and metaphor. In fact, मेरा भी thought इसके पीछे यही है. So when I look at my own screen, I also feel exactly the same. Thank you so much, ma'am, for the observation. Awesome. Sir, I just observed your name actually. Ray, you have put the symbol of rupee over there. That really was wonderful. And what I did is in my name also R is there. So I just wrote now as my name as SAR. So R I made Just it as that symbol. replace S with dollar. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. हमारी एक बहुत प्यारी बहन है, उनका नाम है शिवानी, जिनकी वजह से मैं आप सब लोगों के साथ फंडामेंटली कनेक्टेड हूँ. सो शिवानी को मैंने बोला था कि यार, जब भी मैं उसको लिखता था ना, whenever I write to her or whenever I respond her on WhatsApp, I always write $dollar S के जगह मैं डॉलर लगा देता हूँ. So I always address her like that. तो आप भी करना शुरू कर दीजिए. Sure, sir. You will feel like that, as if that. See, money is a form of energy. Attention is a form of energy. Time is a form of energy. So in my training, I talk about an ATM. This ATM is all about attention, time, and money. And all these are forms of energy. आप कहाँ पे attention दे रहे हो, वो depend करता है कि उस time आपका energy कहाँ पे जा रहा है. ये जब mindsets की बात कर रहे थे, जो पहले के जो 3 माइंडसेट है, जो वीक माइंडसेट्स है, अगर आपका अटेंशन एंड इट इज देयर एनी ऑफ दोस, जो भी हमने वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स डाला है, if your attention in any of those, you are actually bringing that experience into your life. आप चाहो ना चाहो. See, every word that you and I learned is backed by a story. हर शब्द के पीछे कहानी है. That's how we learned every word. Even we learned the alphabets, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कहानी है. So if you know 1,000 words today, so there are 1,000 stories with events which happened in your life, because of which you learned those words, you learned those alphabets. They are all stories. तो क्या होता है कि every word that you speak, you bring that experience of the story in that conversation. For example, if you take the word problem, we discussed that in the last session. You replace problem with any other word and the problem vanishes. ये जितने भी वीक वर्ड्स हैं हेल्थ रिलेटेड, जैसे स्ट्रेस हो गया, देन डिप्रेशन हो गया, वरी हो गया, एंजाइटी हो गया, इन शब्दों का जब आप इस्तेमाल करते हैं अपने conversation में, you bring the experience of those words in your conversation. And the easiest way to handle that is not to use those words in your conversation at all. Anybody who tells you that I'm in deep stress, अब उसको बोलो, अच्छा, you say the same thing without using the word stress. अब आप देखना वो ढूंढ रहा है, शब्द ढूंढ रहा है, and he is also feeling light, he is also feeling happy, better. उसको बोलना वही है, but he cannot use the word stress. है ना, जो डिप्रेशन के पेशेंट है, वो बोलते थे यार मैं आजकल बहुत डिप्रेस्ड,
बोले डिप्रेशन मतलब वो कैसा फीलिंग होता है, व्हाट इट इज, और मतलब आई नेवर फेल्ट डिप्रेस सो आई डोंट नो व्हाट इज दैट फीलिंग, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी। वो एक्सप्लेन करते करते ना देखना हंसना शुरू कर देंगे, बोले यार मैं तुझे बता नहीं सकता यार, वो है, अरे क्या है, दैट मीन्स इट डजंट है, अगर होता तो मुझे भी महसूस हो जाता ना। हाउ इवन आई लर्न फीलिंग्स, वो तो हमने किसी किताब से नहीं सीखा। सो हाउ वी लर्न फीलिंग्स, उसके पीछे भी स्टोरीज हैं। Some event happened in your lifetime and you have discovered that people are excited, so you ask यार क्या है, ये तो somebody said, अरे ये लोग आज बहुत खुश हैं। अच्छा, जब लोग खुश होते हैं तब ऐसे बिहेव करते हो, अच्छा, and you find somewhere where people are not happy, and then you asking your mother क्या हुआ यहाँ पे, बोले यार सब दुखी। then you discover अच्छा शायद ऐसे फीलिंग को दुखी होना बोलते हैं। you heard that word for the first time, so how you learned all these intangible words, feelings आपने सीखा कैसे। How to know that there is difference between encouragement, motivation and inspiration? सुनने तो सब एक ही जैसा लगता है, but you know they are different. इनका feelings भी different है, and these words we learned all through feelings. कहाँ से सीखा हमने? Through experiences. That's how we programmed our mind. NLP है क्या? We are using our own language to program our mind. यही है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो एक एक शब्द जो आपने सीखा, you learned that word through some experience. Every word you learn through some experience. So whenever you bring that one in a conversation, you bring that experience in that conversation. उसको लाना ही नहीं। 3 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने डिप्रेशन से मुक्त किया। आई से दैट आई मैंने मुक्त, एक्चुअली मैंने मुक्त किया नहीं, मैंने वो जब भी ऐसी बात करते थे मैं खाली यही बोलता था कि तुम इन शब्दों का इस्तेमाल ना करके मुझे समझो, क्योंकि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किस टाइप का फीलिंग की बात है, ये कैसा फीलिंग है। मैं आजकल बहुत एंजाइटी में हूँ। अच्छा, ये कैसा फीलिंग होता है, मुझे थोड़ा समझाओ। फिर बोलते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता, दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता तो एक्सप्लेन करो, है ना। सो फिर मैं बोलता हूँ ये जो दवाई आपको दिया ना डॉक्टर, उसको पता ही नहीं, उसको लगता है कि किसी ने अगर डिप्रेशन बोला तो उसको बस ये दवाई दे दो, हो सकता है इस दवाई का आपकी जरूरत ही नहीं। अब उसको भी अब दुकान चलाना है। So, and they actually came out, all 3 of them came out of their depressive life within a month. कुछ नहीं, the only thing that I said is that don't use this word in a conversation. अपने conversation को use ही नहीं करना। Anxiety pills. What is this nonsense? Anxiety pills क्या है? कोई भी दवाई क्या है? आपके शरीर में बन रहे, इसलिए अभी तक आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी। You go to any medicine shop, all these medicines that you see, they are all there inside your body. वो आपके बॉडी में बन रहा है, इसलिए आपको डिजीजेस नहीं हो रहा है। As simple as that. जब उसकी कमी होता है वो डिजीज होता है। डिजीज क्या है? डिस इज, यू आर नॉट एट ईज। अपने आप को ईज में लाने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो। वही काम आप मेडिटेशन से भी कर सकते हो। आप अपने बॉडी को बोलो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड वी आर सिटिंग हियर, आप उनको बोलो जिस चीज की कमी उसको बनाओ, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए दे रहा हूँ, अभी अभी शॉर्टेज है, मैं कुछ दिन के लिए सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन तुम उसको दोबारा बनाना शुरू करो। ऐसे काम नहीं चलेगा। सुबह शाम मैं तुम्हें खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, इसलिए नो लेजीनेस। So when you are instructing your body like that, your body will start working. This is exactly what is happening. It's the world's best pharmacy factory. हमारे बॉडी के अंदर दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन फार्मेसी का फैक्ट्री बना हुआ है, तभी सबको कैंसर नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को हो रहा है। एंड रुचि मैम बैठी हुए हैं, देयर आर एग्जांपल्स वेयर पीपल केम आउट ऑफ कैंसर बाय सिंपली टॉकिंग टू देमसेल्व्स। बातों से कैंसर से मुक्ति मिल गया। कैसे? बिकॉज वो केमिकल्स उस मात्रा में नहीं बन रहा था, अब बनना शुरू हो गया। So coming back to the point, your words matter. The quality of your life is a direct reflection of the words and thoughts that you use in your communication. आप सारे वीक वर्ड्स यूज करना बंद कर दो, देखो क्या होता है। You will be always at ease. कोई डिजीज आपके आसपास तक नहीं भिड़ेगा।
Dis-ease. You just need to disconnect this from disease and you are at ease. तो बेहतर है आप पहले ease mode में आ जाओ. It's all about words, the way you are programming your mind. हर शब्द से आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करो. Somebody tells you, say you are an idiot. अब हो सकता है you are not happy with that. How to tackle? One of the ways to tackle is show me the data. कम से कम ऐसे 5 डेटा पॉइंट्स दिखाओ जिससे ये महसूस हो सकता है या आप इसको साबित कर सकते हो कि मैं इडियट हूं. तो मेरे बारे में ऐसे 5 इंस्टेंस बताओ. कम से कम 5 होना चाहिए. 4 से भी नहीं मानने के लिए तैयार. कम से कम 5. आप सोच अगर उसने 5 निकाल दिया, हाउ लकी यू आर कि लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं, वो आपके लिए टाइम निकाल के दे रहा है. ढूंढ के 5 पॉइंट निकाल रहा है ना. उसको लेके कॉफी शॉप में बैठना चाहिए. आज तक मैंने अपने लिए इतना टाइम नहीं दिया, तूने मेरे लिए टाइम निकाला. आई एम सो लकी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. उसके सबसे उसी को बोलना है कि मेरे लिए टाइम निकाला, मेरी कमियां ढूंढने के लिए. सिर्फ ढूंढने के लिए नहीं, बताने के लिए. बताने के लिए भी टाइम आर्टिकुलेट करना पड़ता है, कितने एफर्ट डालना पड़ता है, सोचना पड़ता है. या इंटरेस्टिंग. आज टाइम घड़ी मूवी नहीं कर रहा है. अभी 5:15 है, अभी भी 15 मिनट है. क्या बात है, टाइम लॉक हो गया क्या आज? Cool. If you have Hello. more questions, you can ask me. Yes, please. Yeah. Kruti. Yeah, hello, sir. Yeah, it's really interesting the way you are communicating and explaining things. I do join you all on Saturday on SOS Killing also, and I enjoy those sessions. I hardly speak out, but listening to you, I felt I should at least say thank you from the bottom of my heart. I'm really enjoying the session. And yeah, as you said, I have faced, like, I should not use that word, as you said, depression, but yeah, I had been through it in the past 4 years. And I'm coming out of it, and this SOS Killing is helping me a lot to come out of all those phases of my life. How can I? The only question is how can I? Yeah, that's true. Yeah, the main question is how can I? Yeah, that's true. That's what I'm doing continuously since a year, and I'm quite out of it. It's true. Thank you so much. Thank you so much for sharing. It really needs guts to share personal things in an open forum. Thank you so much. I'm blessed. I'm blessed. Counting my blessings. Sir, thank you so much, sir, for such a beautiful session, and yes, making it so simple and beautiful. Taking a leave, sir, I've got a session. Thank you so much. God bless you, Ruchi ma'am. Thank you so much for coming to my session and sharing your blessings for me. Thank you so much. Anybody have anything to ask me or say some good words? Sir, just a personal question. Please. So what's the meaning of your name? It's the name of Lord Shiva. So Lord Shiva का जो धनुष था उसका नाम था पिनाक, जिसको राम ने तोड़ा था. So पिनाक जिसका, और पिनाक वो धनुष है जो लॉर्ड शिवा ने परशुराम को दिया था. So पिनाक के नाम से उनका नाम था पिनाक. Okay, sir. एक्चुअली मैं मजाक में बोलता हूँ कि जब शिवरात्रि होता है ना, तो वहां पे हम जाते हैं मंदिर में, तो वहां बहुत भीड़ होता है. तो मैं कभी अपने वाइफ को बोलता हूँ, यार मेरे सर पे पानी डाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा. क्यों उस भीड़ के अंदर जा रहे हो, धक्का मारोगे, फिर लोगों के बोलो थोड़ा मुझे जगह दो, थोड़ा मुझे भी अपॉर्चुनिटी दो, मेरे ऊपर ही डाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा. Yeah, but jokes apart, yeah, so it's the name of Lord Shiva. Okay, sir.
It's a दिल्ली में आने very के बाद unique name. Yeah, Never heard actually, before. it's a very common name in eastern part of the country. आपको Okay. बंगाल में और ओडिशा में मिलेगा बहुत. All right. And जब मैं दिल्ली आया था मेरा बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ था. One of the experience was that my wife's name is Dhruva, Dhruba. तो लोग Oh. सोचते हैं कि ये मिस्टर ध्रुव है और मैं मिस पिनाकी हूँ. तो चिट्ठियां भी आते थे वैसे ही. मैंने जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो वो भी बंदा आके जब मेरा बात किया तो कंफर्म करने आया था कि फोटो तो बंदे का लगा हुआ है, नाम पिनाकी है, क्या बात. तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 30 years ago. Okay, I think this word is also being used in few shlokas. Yes, yes, you will Yeah. find it. जहाँ पे महादेव को रेफर किया गया है वहाँ पे पिनाकी नाम पे यूज हुआ है. पिनाकी होता है. Yeah, I heard it several times, but I didn't know the meaning. I'm actually from Ujjain, Mahakal ki Nagri. Yeah. Wow. Nice talking to you, Navita. You have any Same here, questions to sir. ask, Navita? No, I'm like really impressed with the way you spoke about NLP. I have studied quite a lot of things about NLP, but yes, I mean, everybody has a different perception. And what I could summarize is words are really, really powerful. And it's always good to, hear the interpretations from masters. So yes, your interpretation was really nice. There were definitely few turning points. I wrote down in the chat box. So very Really, good I interpretation. didn't read any of them. Let me just read some of them. All right, sir. थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या है. Okay. Oh, many of them. So many thanks messages. Wow. Sir, can you share the reading list again? Yeah. जो मैं PDF फाइल दूंगा उसमें वो 10 किताबों का नाम होगा. Okay, so and what I will do, I will also share that screen separately in the group. जो books की मैं बात कर रहा था. Those are 10 books on Neuro-Linguistic Programming. All right. This is about Smita. So Smita will put it in the group. Rajesh ji कह रहे हैं thank you sir. Umesh also thank you sir. Umesh ji, are you a CA? क्योंकि आपका नाम मेरे पास है. I probably got to know you from Vikash's group, that reading group. All right. Thank you. Wonderful session, Madha. Amazing session. Thank you, sir. Thank you so much. It's a wonderful session, sir. Little loud, sir. All right. That's really motivational. My name is wow, Ritu Sharma. I really like the way you change. Thank you so much. How to increase self-esteem? How to say how can I? This question is from Shreya Milin. So Shreya, instead of asking how to increase self-esteem, ask yourself, how can I increase my self-esteem? ठीक है. और फिर क्या करना है? सीधा चैट जीपीटी में जाना और यही सवाल पूछना है. हाउ कैन आई इंक्रीज माय सेल्फ? तो चैट जीपीटी आपको बता देगा. इट्स ऑल अवर गेम ऑफ हाउ कैन आई. सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मैं कोई प्रोग्राम में हूँ, so therefore I did not put on the video. Please carry on. Please carry on. If anybody has any query, they can WhatsApp to me. I'm just sharing my number. या कोई वर्गीस क्वेरी है पर हाँ सर. कोई पर्टिकुलर क्वेरी है? पिनाकी जी, ये पीपीटी चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए ना. मैं कर दूंगा सर. सर चैट बॉक्स में ना देके मैं ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप हाँ. ग्रुप कर दूंगा सर. Any more questions?
देखो पूछ लो अभी. We have another 7 minutes, so let's make use of it. NLP का एक बहुत पावरफुल पॉइंट है, वो ये है कि हम बोलते हैं डू नॉट एज्यूम. अब एज्यूम का मतलब है ASS then U then ME. So when you assume, what happens is that you make an ass of you and me. So NLP बोलता है कि instead of assuming, to clarify it, better ask. आप पूछ लो, अगर आपको जवाब वही मिला, fantastic, then your assumption is correct. However, if you don't get the same answer, if you get a different answer, then you are lucky. So if you have any assumption about anything, you can ask and get a clarity on that, clarification on that. And if no questions, can we call it a evening? Cool. ठीक है, तो last point is reset your mindset and make yes, somebody asked me something. So reset your mindset, make your life amazing in every possible way, no matter what, whatever it takes, at least from right now till you go to bed tonight. बाकी कल का कल देखा जाए, आज का आज देख लेते हैं. And this is also one of the mindset which you can apply the moment you get up in the morning. And this I also advise in my time management trainings. जहाँ पे मैं बोलता हूँ जो भी आपके काम की चीज है उसको पहले आप लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट A, और जो अभी काम के लिए नहीं है उसको लिस्ट B में रखिए, और ऐसे रखिए कि कल जब टाइम मिलेगा तब इस पे ध्यान देंगे, आज हम इसी पे ध्यान. तो आज का काम हो गया, कल सुबह उठ के जब दोबारा लिस्ट खोलेंगे तब भी अगर वो उस लिस्ट में है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप बिल्कुल वही कीजिए. कल इसको करेंगे, आज इसकी जरूरत नहीं, आज इस पे ध्यान दें. इसको बोलते हैं पर्पसफुल प्रोक्रेस्टिनेशन. Okay, so procrastination is good. In fact, procrastination is simply super. It's a very powerful tool when you use it with a purpose. अगर वो पर्पस ये है कि मैं 2 घंटे के लिए सोना चाहता हूँ, तो you should be very clear about that purpose. I just want to take a nap for 2 hours right now. उसके लिए कुछ काम पोस्टपोन हो रहा है, तो you should be very clear about it. It should not be कि वो किया and then you are feeling guilty about it. Yeah. So productive procrastination, we'll talk about it. We'll take one of the sessions on this also. Very interesting. Productive and purposeful procrastination. You will love procrastination. You will love to procrastinate after that session, I promise you. That will be a big turning point in your life. आप खुशी खुशी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, लोगों को सिखाओगे कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करना होता है. All right, so let's stay with this thought that reset your mindset, make your life amazing. किसी को ये मत बोलना कि have a nice day, बोलो make your day nice. But in that case the question comes, how can I make my day nice? Yeah? So make your day को जगह आप life लगा दो. So make your life amazing in every possible way, no matter what, whatever it takes, from right now till you go to bed tonight. एक दिन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, कल का कल देखा जाए. और इस एक दिन के लिए अगर हम इस माइंडसेट के साथ रहते हैं, we'll start discovering that what is possible and what else is possible. And you can always ask this question to yourself, with this new awareness, what do you see possible for yourself? This is a very powerful question. In like, it's not in NLP, it's in PLP. I say Pinaki language processing. So PLP वो ये है कि आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, उस वक्त आपको कुछ बोलना नहीं. आप ये सोचेगा अगर वो मेरे बारे में ये सब बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ है मेरे बारे में जिसको जो उसे दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा. And you consider it as a new awareness and ask yourself, with this new awareness, what do I see possible for myself now?
and whatever you see possible for yourself, reset your mindset with that. Okay, we'll explore a lot in this. धीरे 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 करें, थोड़ा थोड़ा आपको मिल गया आज, हम और भी सेशंस करेंगे आगे जाके. Okay, should we close the session? Almost हो गया, 1 मिनट बाकी है. चलो 1 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं. Let's close our eyes. Let's close our eyes. 1 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं. Just sit straight, close your eyes and keep quiet. आज हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिला है. ये जो इतने एनर्जी बॉडी में आ रहा है चारों तरफ से, इसको सेटल डाउन होने दीजिए. टू टेक सम टाइम, स्टे इन दिस वाइब्रेशन फॉर सम टाइम and let it settle down on its own. Don't get distracted by anything even after this session. Don't talk to anybody for next 10 to 15 minutes. Just stay in the vibration of the session, stay in the vibration of all the new things which are coming your way. All the effort that you took, that you put to participate in this session this evening for almost last 1.5 hours, उसके पहले भी आपने इसके लिए preparation किया to be in the session. You just thank yourself for that. Say yourself with your name, that Pinaki, I trust you and you have done a great job. Despite all the challenges you are having in your life. आज के दिन में कितने भी challenges हैं, फिर भी आपने अपने लिए, खुद के लिए अपने me time निकाल लिया 90 मिनट का. Thank you so much that you can do that. और अगर आपने ये किया तो आगे भी आप कर सकते हैं. You are a masterpiece in taking out time for yourself and focusing on the work which is urgent and important for you. You are already a masterpiece in that. You don't need to learn it from anybody. You are already a masterpiece in that. I am already a masterpiece in that. I just need to follow my instinct and follow my intuitions and follow my intentions. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you. I'm closing the session. You can open your eyes now. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.